Hello and a very warm welcome. You're watching Times Now Live. I'm Pratibha. Let's begin with a controversy that has erupted in Gujarat over the curious case of missing teachers. The teachers who are on the payrolls of the government schools, whose names are on the posters and the rosters, but they are missing from the classrooms. Now, the students do recognize some of them. They were last seen a few years ago. Now, if you don't believe us, well, before we get you more details on this story, watch this entire controversy. તમારા ક્લાસ ટીચર કોણે? ભાવનાબેન, બરોબર? બોલો ભાવનાબેન. ભાવનાબેનને તમે ઓળખો છો? ભાવનાબેન તમને ક્યારે ભણાવવા આવ્યા હતા છેલ્લે? ત્રીજા ધોરણમાં ભણાવવા આવ્યા હતા. હવે તમે કયા ધોરણમાં છો? ત્રીજા ધોરણ પછી તમને ભણાવવા આવ્યા હતા ભાવનાબેન? નહીં આયા? હા. So these students have not seen their teacher since the last 2 years. The teacher that these students were talking about is Bhavnaben Patel from Gujarat's Banaskantha, who has been living in the United States for the past 8 years while continuing to draw government salary. According to the parents and the school staff, despite her absence, her name remains on the school roster. Now, Parul Mehta, here's what the in charge principal of the primary school in Banaskantha district had to say. શ્રી પાંજા પ્રાથમિક શાળા હું અત્યારે ઇન્ચાર્જ આચાર્ય તરીકે છું. આ પટ્ટાની આદિવાસી પટ્ટાની એક આ શાળા છે. મારે આવે આ સ્કૂલમાં 9 મહિના જેવો ટાઈમ થયો છે. હવે આ શાળામાં મેં જોયું છે એક ભાવનાબેન પટેલ નામના શિક્ષિકા છે જે પોતે અમેરિકા શિકાગો સ્થાયી છે અને વર્ષમાં 1 મહિનો આવે છે. એટલા માટે આવે છે કે હું ચાલુ શિક્ષક છું ગણતરી કરાવવા માટે અને આ ચાલી દીધું છે કેટલાય વર્ષોથી. અને બાળકોનું હિત શું? બાળકોને એક શિક્ષકની જરૂર છે. My colleague Hiten is joining us on the broadcast with the details. Hiten, this is a bizarre case. This is a teacher who is said to be not even in the country. So not just is she not attending schools, she is not even in the country, but she continues to draw the salary. And who's suffering? It is the students. बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बनासकांठा का ये केस सामने जब आया उसके बाद गुजरात सरकार में एक हड़कंप मची हुई थी. हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर ने तुरंत ही इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पूरे गुजरात में डीईओ को जो है वो अलर्ट भेज दिया था कि सभी जिलों में कितने इस तरीके के टीचर्स हैं. क्योंकि सिर्फ बनासकांठा नहीं, बनासकांठा के बाद खेड़ा हो या फिर जितने भी ट्राइबल एरियाज़ है गुजरात में, डांग, तापी, इन सभी ट्राइबल एरियाज़ में मोस्टली ये देखा गया है कि जो टीचर्स है जो गवर्नमेंट पे रोल पर है वो कहीं ना कहीं लंबे समय से या तो विदेश में है या फिर लंबी छुट्टी पर है. कुछ जगह पर आनंद खेड़ा में ऐसे देखा गया कि कुछ जगह पर टीचर्स अपनी जगह प्रॉक्सी टीचर्स को भेज रहे हैं, यानी कि अपनी जगह किसी और को वो वहाँ पर भेज रहे हैं और वो सैलरी सरकार से लेते नजर आ रहे. तो ऐसे 151 टीचर्स की लिस्ट जो है गुजरात सरकार के हाथ में आई थी, जिन लोगों को अब टर्मिनेट जो है गुजरात सरकार की तरफ से किया गया है. हालांकि सरकार का ये कहना है कि ये जो डेटा है 151 लिस्ट का ये पिछले 2 साल का है. अब पिछले 5 साल का डेटा भी निकाला जा रहा है. हो सकता है कि आने वाले दिनों में 100 से 150 टीचर और कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो 151 का डेटा गवर्नमेंट के पास कलेक्ट हुआ था उसमें से 60 टीचर्स जो है वो या तो यूएसए या तो यूके या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्रीज में स्थायी हो चुके थे. बाकी के जो टीचर्स है वो बिना परमिशन के लंबी छुट्टियों पर है, कोई मेडिकल लीव पर था, ऐसे कोई प्रॉक्सी करवा रहा था. इस तरीके से घटनाएं जो वो सामने आई थी. उस आधार पे गवर्नमेंट ने फिलहाल तौर पर एक्शन लिया है, लेकिन अब सरकार एक नया एक्शन भी लेने जा रही है, क्योंकि कुछ जिलों में ये टीचर्स के एब्सेंस के बाद अब ये देखा गया कि कुछ जिलों में सरकारी स्कूल्स में स्टूडेंट्स ही नहीं है, सिर्फ कई 2 टीचर्स है, एक प्रिंसिपल है, ऐसे 3 लोगों के स्टाफ को लेकर पूरे स्कूल का लाखों का खर्च जो है वो हर महीने निकलता दिख रहा है. तो सरकार ने अब सभी जिलों से रिपोर्ट मांगा है कि ऐसी कितनी स्कूल है जहां पर एक भी स्टूडेंट्स नहीं है. हो सकता है आने वाले दिनों में उन सभी स्कूल्स को भी बंद किया जाए, क्योंकि लाखों का पैसा जा रहा है. जैसे एब्सेंस टीचर्स पर लाखों रुपए सरकार पे कर रही थी, हर महीने वो पैसा सैलरी ले रहे थे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से, लेकिन वो कभी
पढ़ाने नहीं जा रहे थे। ये भावना बहन हो या फिर आनंद की एक और कोई लेडी टीचर थी जो करीब 11-12 साल से विदेश में थी, जो सिर्फ दिवाली पर गुजरात पहुंचते थे अपने घर पर, उस दौरान वो स्कूल में जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और सिर्फ वो 1 महीने का वक्त रहता था जब वो बच्चों को दिखती थी। लेकिन भावना बहन बीते 2 सालों से ही दिखी नहीं थी। अब उन्हें टर्मिनेट किया गया है। हालांकि डीईओ वगैरह से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट तलब किया है कि आखिरकार इस तरीके की कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई। Okay, all right. Hiten, stay with us. Like this, there are many such cases of the missing teachers in Gujarat, like Hiten was also mentioning. Let's get you another example. Sonal Parmar, a teacher at the Hathaj Primary School in Nadiad, is also reportedly absent for the past 1 year. Typically, when teachers take leave or travel abroad, they have to take a no objection certificate. But in Gujarat, several cases of missing teachers have revealed that most of them are on leave without a valid NOC. આ વસ્તુ મારે અહીંયા તાલુકામાં આવે 8-9 મહિના થયા. આ વસ્તુ મારા ધ્યાને આવેલ નથી. શિક્ષણ બાબતે જે આ વસ્તુ બની છે એ જરા પણ ચલવી લીધા જેવું નથી. જે આપે જે મને રજૂઆત કરી કે આશીષ પટેલ નામના જે શિક્ષક ખરા અમારા વાટા શિવપુરા જે માલીટાળી ગામને પડું છે ત્યાં પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક તરીકે નોકરી કરે છે અને એમની જગ્યાએ ડમી શિક્ષક મેકે છે. આ વસ્તુ ધ્યાનમાં નથી, પરંતુ ખરેખર આ શિક્ષણ માટે બહુ જ ખરાબ વસ્તુ કહેવાય, કારણ કે બાળકોના ભવિષ્ય સાથે આ છેડછાડ વસ્તુ છે. એટલે અમે આ વસ્તુ ઉપર 100% એક્શન લઈશું. હું આજે જ ટીપીઓ મેડમને બોલાવું છું, એમના જોડે ચર્ચા કરું છું. ડીપીઓ સાહેબને પણ હું ધ્યાન દોરું છું કે આ બાબતે શિક્ષકમાં કાર્યવાહી એમને કરે. Now, after these reports came to the fore, the Gujarat government swung into action. The education minister has said that 31 teachers are not in the country, 32 are not coming to schools. He said that the information is being sought of all such teachers and strict action will be taken against all those who are missing. करीब 31 टीचर्स विदेश में गए और 32 टीचर्स बिना परवानगी से स्कूल में आ ही नहीं रहे. ये सब टीचर्स पर हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे. अभी तक ये 64 टीचर में एक भी टीचर को सैलरी हम नहीं दे रहे, जो शिक्षा विभाग की ओर से मैं आपके सामने रखता हूँ. Meanwhile, during the 3-day monsoon session of the Gujarat Assembly, the State Education Minister also said that 134 teachers of the government-run and grant-in-aid schools in Gujarat were sacked between 2019 to 2022 for being on unauthorized leave. Also, as per him, no teacher who remained absent or is staying abroad has been paid salary. The Congress, however, has slammed the Gujarat model. What happened, Gujarat situation is the worst, and it was exposed when there was when Article 370 of the Constitution was abrogated. Then, of course, different indicators of human development, education, health came in the light, and to surprise the one that at one point of time Gujarat was a Gujarat model. So it's a worst. Only few places you can see that is signing, maybe Gandhinagar, Surat, Ahmedabad, and rest of the Gujarat is the worst. So, Hiten, what is the action that has been taken? On one side, the BJP says that salaries have not been paid. The Congress party, of course, mocking this as the Gujarat model. But what is the reality? Has action been taken? बिल्कुल देखिए, अब तक 134 टीचर्स पर कार्रवाई की जा चुकी है. 134 टीचर्स को पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया गया. कुछ लोगों को नोटिस भेजा गया है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के लॉ के हिसाब से जिन लोगों ने मेडिकल लीव ली है और वो लंबे समय से मेडिकल लीव पर है, तो उन्हें नोटिस भेजकर सबसे पहले उनका जवाब मांगा गया कि आखिरकार उन्हें ऐसी कौन सी बीमारी है कि वो इतने लंबे समय से मेडिकल लीव पर है. अगर उसके बाद उनकी जाँच की जाएगी, अगर वो दोषी पाए जाते तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. 151 की लिस्ट थी, 151 में से 134 टर्मिनेट किए जा चुके हैं. ये डेटा 2019 टू 2022 का है. लेकिन 22 से लेके अब तक, यानी कि
2024 तक ऐसे कितने टीचर्स हैं जो एब्सेंस है और वो अपनी जगह डमी टीचर बिठा रहे, उन लोगों की लिस्ट अब निकाली जा रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक्शन लिया जाए। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर ने हाल ही में मॉनसून सेशन में असेंबली में तक ये बयान दिया है कि अभी एक्शन रुका नहीं है, एक्शन चल रहा है पूरी तरह से। आगे और भी रिपोर्ट मंगाई गई है सभी जिलों से। जैसे उनके पास लिस्ट पहुंचती जाएगी, ठीक उसी आधार पर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो कार्रवाई करती जाएगी, लीगल एक्शन लेते जाएंगे। सीधा सख्त संदेश दिया गया है कि सभी को टर्मिनेट किया जाए और ऐसे किसी भी टीचर को सैलरी जो है वो दी ना जाए। ये इस वक्त सिचुएशन है गुजरात में कि कहीं ना कहीं इतने सारे टीचर्स पे जो है वो एक्शन लिया गया है। सिर्फ ग्रामीण इलाकों में नहीं समझ में आता, अगर ग्रामीण इलाकों में होता तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ट्राइबल बेल्ट या ग्रामीण इलाकों में टीचर्स इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। लेकिन शहरी इलाके की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद, राजकोट, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में भी टीचर्स जो है वो एब्सेंट नजर आए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टीचर्स भी जो है वो विदेश में लंबे समय से स्थायी नजर आए और यहाँ से सैलरी लेते नजर आए। तो उन सभी पर भी जो है कहीं ना कहीं एक्शन लिया गया है और आने वाले दिनों में ऐसे अभी और टीचर्स की लिस्ट जो है वो खंगाली जा रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी सरकार की तरफ से जो है वो कार्रवाई की जाए। Okay, all right. Hiten, stay with us. We also, in fact, spoke to the head teacher regarding the allegations of the teachers being missing. Listen in. સોનલબેન એનઓસી વગર વિદેશ ગયેલ છે અને સાહેબને પણ એની જાણ કરેલી છે। અમે એમને નોટિસ પણ આપેલી છે અને જિલ્લામાંથી તાલુકામાંથી પણ એમને ત્યાં નોટિસ બજાવવામાં આવેલી છે અને સાહેબે અમને કહ્યું છે કે અમે એમની પર એક્શન લઈ અને તમને જગ્યા કરી આપીશું 6 થી 8 માં। કેટલા સમયથી આ બેન વિદેશ ગયા છે? બેન લગભગ એકાદ વર્ષથી ગયેલા છે વિદેશ, પરંતુ એમની કોઈ હાજરી પૂરવામાં આવતી નથી અહીંયા। તો સાહેબ પગાર બી નહીં થતો હોય ને? હા, એમનો પગાર પણ નથી થતો વર્ષથી। अच्छा, हाल स्कूलમાં કેટલા શિક્ષકોની ઘટ છે? હાલ અમારે 6 થી 8 માં એક શિક્ષકની ઘટ છે। એટલે જો આ બેનને હટાવીને નવા શિક્ષક મૂકવામાં આવે તો વિદ્યાર્થીઓનું હિત સચવાય એમ? હા, શ્યોર। શું તમે શું ઉપર રજૂઆત કરે? અમે જિલ્લામાં પણ રજૂઆત કરેલી છે, માનનીય ટીપીઓ સાહેબને પણ રજૂઆત કરેલી છે કે આ બેન આ રીતે ગયેલી છે વિદેશ અને એમની જગ્યાએ એમને કોઈ નવા શિક્ષક ફાળવી આપવામાં આવે। કયા વિષય? ઇંગ્લિશમાં ભાષાના ટીચર છે।